Hello, dosto. Today we have a very reputed chartered accountant, CA Preeti Mehrotra, with us. She is a visiting faculty for OC and MCS over a decade. She is empaneled as a faculty in ICSI. She is also empaneled as a career counselor in our reputed ICAI. She is a financial trainer in Bank of Baroda, BOBFSL, Bank of Baroda Apex Academy Gandhinagar. She has also given financial training in Reserve Bank of India. She has been a speaker in many webinars and trained the trainer program hosted by ICAI. She has been the guest lecturer for Accountancy and Economics. She is also a visiting faculty for topics like derivatives, money laundering, etc. in Satyawati Institute of Financial Learning, Mumbai. She is also a consultant for financial planning and advisory services. Ma'am, first of all, I would like to dedicate a small poem as a welcome gesture to you. Meet CA Preeti Mehrotra, a shining light. In the world of finance, she is a true delight. Her knowledge and skills are truly remarkable. Her dedication and hard work are admirable. If you need guidance on your financial path, CA Preeti Mehrotra is the one to ask. Hello, ma'am. How are you? Hi, Vipin. Thank you so much for the wonderful introduction and for having me here. It was truly a delight to listen to such beautiful poem that you have written, and I'm going to cherish it for sure. And thank you so much for having me here. Thanks a lot, ma'am. It is very nice to see that you liked my small poem. Ma'am, first of all, I would like to ask, how are you feeling today? I'm feeling really great because it feels so good when young aspiring chartered accountants they take this initiative and they do something out from the academics as well. They are not confined to that CA, typical CA image that just studying and studying. Apart from academics, also they are doing wonders, creating this channel and inviting chartered accountants to share this their journey, to bring transformation, to influence the coming CAs. It's really a very good job that you are doing. Thanks a lot, ma'am. That means a lot. Ma'am, should we begin with the questions because many students are waiting just to hear all those questions from you and the answers which will help them in their lives? Sure, let's go ahead. Yes, ma'am. Could you share your experience while navigating the ups and downs in your life while becoming a chartered accountant and how you were able to manage the challenges that arose meanwhile in your journey? Okay. See, when we talk about challenges, I think every person has their side of struggle story. When we talk about successful people, or when we look at our role model, or we follow any successful person on any social media platform, we are just off of their personality, that oh my god, that person is doing so well, that person is leading such a good life. We are in awe of that person's personality. But Vipin, I will tell you, it's just like a tip of an iceberg, right? Yes, We ma'am. just see them from outside, but lot of struggle, lot of hard work, lot of patience, lot of dedication, sincerity, toil, hard work has gone for that person to reach where they are. So if I talk about my journey, if I'm able to inspire today so many people, if I am, I have given my introduction to you, I'm a trainer, I'm a financial trainer, I'm a faculty, I'm a guest lecturer. So it's not that I started being such role models from the very starting. So I started step by step, and of course I had my own journey, I had my own struggle, I had many downs as well. So my journey was not like this only. It Yeah, had, it was a curvy path, and obviously, every normal person has to face struggle and success, right? So it's not always an upward journey. So I had my fair downs as well. So see, what one message I want to give to your viewers, that it's okay to fall. It's yes, not a ma'am. crime to fall, right? So if I fall down, it's not a crime. What is the crime? That I still, I'm just lying on the ground and I'm crying that oh my god, I have fallen, now what to do next, abhi मैं क्या Right, करूं, अभी तो मैं गिर गई हूं, मैं क्या करूं. That is a crime. right, What right. is important is, if you have fallen down, it's absolutely fine. The next step is, you have to stand quickly again, you have to dust yourself, and you are ready for the next battle, right? So as soon as you are ready to stand and bounce back,
that decides your destiny. So I Right. had my fair shares of down as well, but I was always like, okay, if I have fallen, quickly I'm going to, stand up. Some people, they take months, some Hmm. take years. ओ गॉड, अभी गिर गए, अभी उठे कैसे, अभी तो हम अपने सेल्फ पिटी वाले जोन में जी रहे हैं. आपने वो कंगना रनौत का वो मीम बहुत ज्यादा देखा होगा, राइट, राइट. है ना? वो हाँ. मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, शायद क्वीन लाइफ का खराब है, हो गया है. ये क्या होगा मेरे साथ, या हाँ. राइट. तो आपको डिसाइड करना है कि आपको उस जोन में रहना है. देखिए, इट्स नॉर्मल, आप एक दिन उस जोन हम्म. में रह सकते हैं, आप 2 दिन नॉर्मल उस जोन में रह सकते हैं, ये सबके साथ होता है. लेकिन हम्म. अब आप महीनों महीनों सालों साल उस जोन में रह रहे हैं, या फिर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आप डिसाइड करते हैं अभी बस, अभी मुझे उठना है, आई हैव टू गेट अप, आई हैव टू बाउंस बैक, एंड आई हैव टू फाइट बैक. तो अब राइट. ये आपको डिसाइड करना है. सो मेरे साथ क्या है, ठीक है, आई विल बी इन दैट जोन फॉर हाफ डे, 1 day, max to max 1.5 day. After that, I'm going to dust myself. I am to get up and I'm ready to, perceive the challenge and go and fight for that challenge. So Right. I had fear struggles, I had fear downs, but I always bounced back and by God's grace emerged as a winner. या श्योर मैम. मैम, दिस इज़ अ वेरी ग्रेट लर्निंग फॉर आवर स्टूडेंट्स कि अगर आप हार रहे हो एक बार तो ये मतलब नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो गई. फिर से उठो, फिर से मेहनत Exactly. करो और अपना टारगेट अचीव करो. Exactly. एग्जैक्टली, आपको उस जोन में नहीं रहना है, अपने को सेल्फ पिटी, क्रिबिंग, उस जोन से निकाल कर आपको अपने आप को बाहर लाना है. और उस जोन से आपको कोई नहीं निकाल सकता, केवल आप ही अपने आप को निकाल सकते हैं. तो जितना जल्दी आप बाउंस बैक करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा. यस. राइट, एब्सोल्युटली. Ma'am, the CA course itself is long enough and it has its depth and breadth. Are there any particular lessons that or insights that you had while becoming a reputed chartered accountant that you always have cherished and still value right now? Okay. So see, Vipin, we all know that CA is one of the toughest course, Right, right? So we all know this fact. And CA final ka syllabus itself, it's an ocean. We right, all right, know this thing, right, right? So if I talk about my CA journey, that how that CA journey has helped me, I would say that when we talk about a chartered accountant, few adjectives define chartered accountants. Like, right. they are very sincere, they are very Mm-hmm. hardworking, right? Absolutely. They are having patience, they are having perseverance, they are Right, multitaskers, right? They are very absolutely. jugadu, Ah, they are of very course. jugadu, right? Right. They quickly, they are very solution oriented, Mm-hmm. juggling between their office, their classes, doing their self study, it makes them very quick, very apt. So all these learnings, all these learnings have shaped my personality. So Mm-hmm. in my family, I am only a CA from my mother's side. My husband is also a chartered accountant. So but only we both are in our respective families, we both are first generation CAs. So all these qualities have, helped us that we are never afraid of any problem. लगता है अभी CA handle कर लिया, अभी तो life Mm-hmm. में सारी problems handle हो ही जाएंगी, right? So this course makes you mentally tough. This is Right. the beauty of this course, right? You get this never giving up attitude, right? कि हाँ, आने दो, जो है देख लेंगे हो क्या जाएगा. होता है. यस, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा. अभी सीए हो गया है, अभी तो Mm. बाद में अभी सब कुछ हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स, that I have experienced myself. So it has made me mentally very, very strong. It has given me immense patience, right? It has made me very, very humble, very, Right, very sure. down to earth, राइट? क्योंकि कभी आपको पता नहीं होता ना, जूनियर कब आपका सीनियर बन जाएगा, Right. Of the राइट? सो दिस articleship. कोर्स, यस, सो दिस कोर्स कीप्स यू ग्राउंडेड, Right, राइट? आप ma'am. मल्टीटास्किंग बहुत अच्छा कर सकते हो, आप कॉलेज भी मैनेज कर रहे हो, आप अपनी आर्टिकलशिप भी मैनेज कर रहे हो, सेल्फ स्टडी भी मैनेज कर रहे हो, क्लासेस भी मैनेज कर रहे हो, क्लाइंट्स की कॉल भी मैनेज कर रहे हो. तो ये Absolutely. सारी चीजें, जब आप सीए बन के निकलते हो तो यू हैव अ वंडरफुल पर्सनालिटी, आपका एक ऑरा अलग होता है, आपकी बात ही एक अलग होती है. सो दिस कोर्स हैज गिवन मी many qualities, it has made me a wonderful person, I would say. Sure, ma'am. Ma'am, coming to my next question, while there are many high-paying career options available to those who have completed the CA curriculum, yet you choose to pursue a different route and became a corporate trainer. What was the decision-making process behind this, and how well you managed all these things throughout your career?
Okay. See, Vipin, to give the answer to this question, I'm going to give an example to you so that our viewers understand, what Hmm. I actually mean to say. Right. Vipin, have you heard about the word Monday blues? Oh, no, Monday ma'am. blues. Monday blues, yes, So ma'am. Of course, sure. you have heard, right? आप Yes, मंडे ma'am. को अपना रेडियो ऑन करते हैं, यू आर ड्राइविंग एट योर वर्क प्लेस, तो Hmm. हर चैनल पे मंडे ब्लूज पे पूरा लेक्चर आ रहा होता है. Right, right, सो क्यों आते हैं ये मंडे ब्लूज? इफ यू आर एंजॉयिंग योर वर्क, आई डोंट थिंक कि आपको मंडे ब्लूज हो सकते हैं. right. कई बार आपने सुना होगा, दैट पीपल आर सेइंग डेली मॉर्निंग आई हैव टू ड्रैग माई सेल्फ आउट फ्रॉम माई बेड एंड आई हैव टू हेड टूवर्ड्स माई वर्क प्लेस. आई एम लीडिंग सच अ मोनोटोनस लाइफ. I'm sure you agree with me. You must Sure, have ma'am. heard these sentences, right? I'm not speaking any alien sentences. Right, These sentences are very much the part of our life. Oh God, we have to go to the same place. We right, have right, to interact with people. My life has become so monotonous, right, right? right. We all hear such sentences. Why we need to hear such sentences? If you enjoy your work, right, you will never ever have to experience these sentences that I'm talking about. So Hmm. when we talk about that, why you are not enjoying the work that you are doing, because that is not your passion. Right. Now, what is the meaning of passion? Passion means, if you ask from yourself that what is one thing that I can do for the next 40 years of my life, and your heart says that yes, I can do this for the next 40 years of my life, and I'll be very happily doing it. I don't need any external motivation. I don't need to, motivate me from inside. You just ask me to do this work, and I'm ready for that. That is your passion. Right. Now, when students come and ask from me, ma'am, how to know what is our passion? The S- problem is this. अभी हम 24, 25, 26 के हो गए, अभी हमको पता नहीं है हमारा पैशन क्या है. हम लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, सब जगह ये वर्ड पैशन पढ़ते रहते हैं. डू द वर्क एज पर योर पैशन. लेकिन अभी हम अपना पैशन पहचाने कैसे? वेरी इजी. थ्रू योर चैनल आई विल टेल द व्यूअर्स कि कैसे पहचाने आपका पैशन क्या है. देखिए, पहचानना तो आपको पड़ेगा, right? Right. I can just guide you, I can just mentor you, I can just direct you. For example, if I and you go to a restaurant, Hmm. right, and I said, okay, Vipin, I am going to pay for the bill and this party is from my side. Vipin, what would you like to order? You will say Um, out of courtesy, ma'am, you can order anything. I said, no, Vipin, please tell me your favorite cuisine. right. And you are like, no, ma'am, you have to tell my favorite cuisine. I'll Huh. be like, Right. Vipin, you have to tell me your favorite cuisine. No, ma'am, you tell me what is my favorite cuisine. Will I have an answer to that? Absolutely not. Not at all. I'll be like, Vipin, तुम्हें क्या अच्छा लगता है ये तो तुम ही बताओगे ना. Nobody Right. in the world can tell you कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है. ये तुम ही बता सकते हो. फिर मैं उसको ऑर्डर करने में, उसको अचीव करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ. Right? If you Right, said, ma'am. ma'am, I like Chinese platter, you said, ma'am, I like, a South Indian platter. तुमने मुझे बताया, मैंने तुम्हारी हेल्प की कि कैसे उस प्लेटर को तुम्हारे तक पहुंचाया जाए. तो पहचानना तो तुमको होगा, मैं Right. डायरेक्ट कर सकती हूँ. So Yeah. after you become a chartered accountant, you have only three options. Either you can go for job, or you can be in practice, or you can be a faculty. Right? Right. Practice means you can be an entrepreneur as well. Right. So either job, faculty, like I told about myself, I'm a corporate trainer, financial trainer, soft skill trainer. So तीन option है आपके पास. अभी मुझे स्टार्टिंग से ही पब्लिक स्पीकिंग में बहुत इंटरेस्ट था. मींस Okay, आई ma'am. नो माय स्ट्रेंथ, आई हैव वंडरफुल कन्विंसिंग पावर, आई हैव वंडरफुल पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स. तो मुझे स्टार्टिंग से इसमें इंटरेस्ट था. सो आई डिसाइडेड कि यार मुझे, आई डोंट वांट टू डू दैट अगेन. मेरा पैशन क्या था? I don't want to do that, conventional job, going to a Hmm. place from 9 to 5, same office, same people. I didn't want that for me. Again, it's my personal choice. Hmm. My husband is a CA, he's in job, he's in Right. public sector bank. Unka preference tha I should be having a job, well paying job, nice career, and I have to climb the corporate ladder. Ye unka passion tha, and he's doing wonders in that. Right. And my passion was
daily I travel to new places, daily I get an opportunity to interact with so many different people, having different mindset, coming from different cultures and background. So I decided to choose this field for myself. So now you have to decide this, that आपकी लाइफ में क्या चीज वैल्यू करती है. वैल्यू ऑफ पावर, आपको अपनी लाइफ में पावर चाहिए. वैल्यू ऑफ मनी, आपको चाहिए, आई शुड बी एडिंग एंडलेस नंबर ऑफ जीरोस इन माय बैंक अकाउंट, दिस इज माय Right. ऑब्जेक्टिव. बिल्कुल हो सकता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, राइट. या फिर वैल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, Hmm. right? कि नहीं, I should be able to spend time with my family also, I should be relaxed, I should have some me time also. तो आप क्या वैल्यू करते हैं वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा. सो डोंट बी द पार्ट ऑफ रैट रेस. ये लाइन हम बहुत बार सुनते हैं, Right. लेकिन जाने अनजाने हम उसी में दोबारा से चले जाते हैं, राइट. सो प्लीज थोड़ा सा टाइम आप अपने साथ बैठिए और सोचिए कि वैल्यू ऑफ पावर है आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट, वैल्यू फॉर मनी है, वैल्यू फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ है. क्या चीज है जो आप प्रेफर करते हैं, अकॉर्डिंगली आप अपना करियर डिसाइड कीजिए. अभी Right. इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप आफ्टर बिकमिंग सीए कर सकते हैं. देयर आर एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज. देखिए अभी सीए कर लिया ना, Hmm. अभी आप कुछ भी कर देंगे, कुछ Right. भी. आई कैन गिव यू दिस थिंग इन राइटिंग. आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास इतने सारे एंडलेस ऑप्शंस हैं. तो जिसमें आपका दिल आपको अलाउ करे, प्लीज गो एंड डू दैट. तो एक पेन और पेपर लेकर बैठिए और सोचिए कि मैं अपनी लाइफ में ऐसा कौन सा काम है जो अगले नेक्स्ट 40 years इफ somebody ask me to do, I can very very happily go and pursue that. That is your real passion. Now sometimes, Vipin, I have sessions 16 hours a day, and you will find me with the same energy throughout the sessions. Why? Because I am doing the job as per my passion. I have chosen this field for myself. So it's up to you which career option you want to go. So don't follow the rat race. Sit down with pen and paper and find out what works best for you. Right, ma'am. Ma'am, I would like to add on something with this, that earlier, as you were mentioning, that you have to move from Mumbai to Delhi multiple times and to various other locations like Meerut and Agra, etc., to just take seminars. This is just possible because you love the passion which you are following, and you love to teach students, you love to mentor people. So that's why you are doing all the hard work. To other people, it seems Absolutely. glamorous that a teacher is coming and she's giving lectures, she's looking good and she's having fun with the students, and she's also getting paid for it. But behind all those things, there is determination, hard work, and lot of perseverance required. Right, ma'am? Absolutely. Absolutely, Vipin. Ma'am, coming to my next question. In today's digital age, we see a lot of emphasis on social media, technology, and internet, not even in the children, but also in the adults. What's your take on this? What do you think this trend is going to do with the society and children at large, and basically our CA students? Okay. So see, Vipin, if we talk about social media, it's a boon also. Right. Again, it's debatable. It depends on us that how we are using it. Right. So if you're using, Telegram, if you are using the group for your educational purpose, what the amendments are coming, you want to be in touch with the particular group of students, what's happening, some new notes are coming. So it depends on you. You know it very well that whether you are using it for productive purpose or unproductive purpose. When I go and I mentor, young CA and CS and CMS students, they come to me and they are like, कि मैम अभी सोशल मीडिया का इतना एडिक्शन हो गया है कि 3-4 घंटे कैसे एक रील्स पे इंस्टा की रील्स पे चले Right. जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता है. फिर हम नेक्स्ट 3-4 घंटे इस गिल्ट में स्पेंड करते हैं कि हमने पहले 3-4 घंटे स्पेंड कर दिए हैं. ऐसे करके ऐसा लग रहा है लाइफ स्लिप हो ही जा रही है. अभी करें तो क्या करें, इतना सोशल मीडिया का एडिक्शन हो गया है. तो देखिए अगर ऐसा है, दिस इज रियली अलार्मिंग थिंग कि आपको अभी अपने वेस को इम्प्रूव करना चाहिए. तो अभी बच्चे कहते हैं कि मैम अभी कैसे इस एडिक्शन से छूटे, फोन Right. दूर भी रख देते हैं तो भी पढ़ते पढ़ते दिमाग उसी में जाता है कि बस 5 मिनट देखेंगे, और वो 5 मिनट का 50 मिनट्स बन जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता. आई होप विपिन आपने भी ऐसा प्रॉब्लम फेस किया होगा कभी, 100%, ma'am. है ना.
हाँ, तो हम्म, अभी मैम आप हमें इसका सोल्यूशन बताइए। ये तो कहना बहुत इजी है कि नहीं ये गलत कर रहे हो आप अगर सोशल मीडिया का अनप्रोडक्टिव यूज कर रहे हो, इसमें सोल्यूशन क्या है? सो विपिन, अभी करेंटली आई एम रीडिंग अ बुक नेम एटॉमिक हैबिट्स। इट्स अ ओके, ब्यूटिफुल बुक, एटॉमिक हैबिट्स। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें यही बताया गया है कि अगर आपके अंदर कोई ऐसी एडिक्टिव हैबिट डेवलप हो गई है जिसको आप ब्रेक करना चाहते हैं, तो जस्ट से दैट हैबिट अलाउड। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। अभी हमको पढ़ते पढ़ते हम ऑडिट पढ़ रहे हैं, हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर से वो ट्रिगर हुआ यार थोड़ा सा देखूंगा, बस 10 मिनट लिंक्डइन देखूंगा, राइट? राइट, और फिर हम रोक नहीं पाते, बस 10 ही मिनट तो देखूंगा, क्या जा रहा है 10 मिनट देखने में। तो you want to break this habit, right? You're not happy with this habit. So what is the first step atomic habits में बताया गया है जो आप फॉलो कर सकते हैं? तो जब आपके अंदर वो ट्रिगर पॉइंट आए कि आप जा रहे हैं अपने फोन को टच करने के लिए और वो टाइम आपका पढ़ाई का है, आपने 3 घंटे ऑडिट पढ़ने के लिए डेडिकेट करे हुए हैं, तो उस वक्त व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज यू से अलाउड, नो आई एम नॉट गोइंग टू यूज सोशल मीडिया, इट्स गोइंग टू राइट, वेस्ट माई। so when you say the things aloud, no, I'm not going to eat junk food. It's going to be bad for my health. No, I'm not going to waste my time. My exams are approaching. So whenever you instruct yourself, राइट, सो योर हम्म, ब्रेन गेट्स सिग्नल कि नहीं ये काम नहीं करना है, आपने अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दिए हैं। देखिए हर वक्त आपको कोई नहीं चाहिए कि आपके मम्मी पापा स्टिक लेके, आपका बॉस आपके ऊपर खड़ा रहे। आप राइट, खुद भी अपने ब्रेन को इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको लगता है आपके लिए ठीक नहीं है, जस्ट लाउडली इंस्ट्रक्ट योर माइंड। और ये बहुत ही अच्छी हैबिट है, मैंने इसको अपने ऊपर ट्राई करा एक दो चीजों में। कि जैसे मैं वॉक करने नहीं जा रही थी, सो आई सेड प्रीति दिस इज नॉट गुड, यू शुड गो फॉर अ वॉक। आई जस्ट पुट अप माई शूज एंड आई वेंट फॉर 1 hour वॉक, राइट? तो कोई भी आप अपना एडिक्टिव हैबिट का पैटर्न ब्रेक करना चाहते हैं, सो जस्ट से दैट थिंग लाउडली, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू वर्क। सो अगेन सोशल मीडिया हैज बेनिफिट्स ऑल्सो, एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, आप रिविजनरी वीडियोस देख रहे हैं, राइट? राइट, आपके पास वो प्लेलिस्ट पे चल रहा है, वो आपको बेनिफिट कर रहा है, गो फॉर इट। लेकिन अगर आप केवल रील्स और अनप्रोडक्टिवली उसको इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ फेयर आइडिया, यू आर वेस्टिंग योर मच टाइम। राइट, प्लीज डोंट डू दिस। राइट। मैम, आई वांट टू आस्क समथिंग रिगार्डिंग दिस। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि इवन इफ वी वांट टू स्टॉप यूजिंग द सोशल मीडिया और हम लोग को लग रहा होता है कि नहीं नहीं थोड़ा सा यूज़ कर लेता हूँ, तो क्या होता है ना कि पढ़ाई करते करते मन भटक सा जाता है। तो उसके लिए कोई मतलब वो नुस्खा है क्या कि तुरंत वो कंट्रोल में आ जाए? अलाउड कह दिया तो फिर भी हाँ, नहीं हो रहा है तो क्या हुआ? बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि सबके साथ ऐसा होता है, राइट, राइट? तो सबसे पहले तो हमने क्या समझा, एवरी वन फेसेस दिस प्रॉब्लम, कि हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम, हमको लगता है थोड़ा सा उठ जाएं, ये कर ले वो कर ले। तो ऐसे में यू जस्ट गेट अप, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, राइट? अपने सामने वॉल पर लिख कर लगा लीजिए कि अभी एक डेडलाइन अपने आप को दीजिए कि मुझको 5 दिन में ऑडिट का रिवीजन कंप्लीट करना है तो करना है। रिटन गोल्स अपने स्टडी टेबल पे लिख के लगाइए, आई हैव टू कंप्लीट द रिवीजन ऑफ ऑडिट विद इन these many number of days, I have to complete these many chapters of costing, right? So it is going to keep you focused. And then within everything at the end of the day is your willpower। आप राइट, जो भी काम कर रहे हो, केवल सीए की डिग्री नहीं, आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, what मोटिवेट्स यू टू डू दैट, आपका कितना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है उसको करने का। तो जब आपका लाइफ में एम क्लियर होगा कि चाहिए सीए प्रीफिक्स तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, खुद से आप बेस ढूंढ लोगे अपनी अटेंशन लेकर आने की, अपना टाइम मैनेज करने की। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, हमको पता है ये बात अच्छे तरीके से। तो राइटली जिस सेड। दिन, अभी देखो आपको विपिन भूख लगती है, ठीक है, भूख लगी, तो अपने आप जाओगे, सपोज कोई नहीं है आपके घर में, यू लिव अलोन, खुद से खाना बनाओगे, राइट? राइट, खुद ही वेजिटेबल्स चॉप करोगे और खाओगे। कहोगे भूख तो मुझे लग रही है, लेकिन काश कोई मुझे मोटिवेट करे, यूट्यूब पे मैं थोड़ी मोटिवेशनल वीडियोस देखूं, फिर ही नहीं ऐसा खाना नहीं होगा। मंगवाऊं या फिर बनाऊं, नहीं ना। तो अभी फिर वही बात हो गई, सक्सेसफुल मुझे होना है,
लेकिन कोई मोटिवेट करेगा मैं तब सक्सेसफुल होने के लिए काम करूंगा, नहीं। आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो खुद से उठना है, खुद से डिटरमाइंड होना है, गिर जाओ दोबारा उठना है, लेकिन अपने लिए जो गोल बनाया है उसको वॉल पे लिख लेना है और उससे लेस में सेटल नहीं होना। You have to fight for your goals. I hope I have made myself clear to you. Yes, ma'am, absolutely. Ironically, uh, in today's digital world, social media presence or digital presence is also very important. You yourself have a strong presence on social media platform like LinkedIn, Twitter, and Instagram, YouTube. So, how do you see the importance of these digital platforms like LinkedIn, etc.? And what is the purview of professional world and business in general with these digital media platforms? Yes, definitely, Vipin. Social media presence is very, very important. Again, it depends. If you're having a good LinkedIn profile, it surely adds advantage to your resume, right? Yes. So if you ask from me, right, I am not much active on Insta, but Mm. on LinkedIn, you are going to see me very, very active. You can notice this yourself as Yes, ma'am. well. So devote some time, okay, 1 hour max to max 2 hour, 1 hour in the morning. I mean, after you have study, like you are a student right now. आपकी प्रायोरिटी किस पे होनी चाहिए? पढ़ाई पे और एग्जाम देने के लिए, Right. राइट? अब मेरे टाइम पे तो देखो लिंक्डइन, यूट्यूब ये सब कुछ था ही नहीं व्हेन आई वाज स्टडीइंग। तो अभी बीइंग अ स्टूडेंट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए आपके सब्जेक्ट्स पे, आपके एग्जाम्स पे। हाँ, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए भी आप अपना टाइम रिस्ट्रिक्ट कीजिए। 1 आवर, 2 आवर, जो भी आपका स्केड्यूल आपको परमिट करता है, यू कैन अलॉट दैट मच टाइम। रेस्ट आपको डिसाइड करना है कि अभी नीड ऑफ एन आवर क्या है, अभी क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Okay. Coming to my next question, as a married woman with a busy schedule of seminars and other professional commitments, how do you maintain your work life balance and prioritize your responsibilities towards your family and your personal well being, ma'am? Okay. So if I talk about this, Vipin, see, I'm a person who genuinely, remains very, very happy from inside out. So recently, I'll just share an example with you. Recently, one student, I was going in MCS batch, so he complimented me, ma'am, that you are, in the process of reverse aging. I have Right, taken his class 3 to 4 years back in orientation. So I was like, thank you so much for this compliment. And now you will, relate with me. Many a times when we give compliment to the people, they are like, they're not in the accepting mode. right. If you will give compliment to somebody, they will be like, अरे नहीं, मैं कहाँ, Mm. नहीं नहीं नहीं, मैं मुझे मुझे क्यों बोला है, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। नो, if somebody gives you compliment, accept the compliment graciously, feel good about yourself, because ultimately whatever you are feeling from inside, the same you are reflecting outside. I mean, there is a direct consonance. If you are not feeling good from inside, you are very successful, you are at a very niche position, but if you're not feeling good from inside, you're not enjoying your life. See, life is very beautiful, life is very precious. So if you're not living in the present, you're not enjoying what you already have accomplished. हमें क्या रहता है, अच्छा ठीक है, अभी अभी सीए इंटर हो गया है, जब मैं सीए फाइनल क्लियर कर लूंगा मैं तब खुश रहूंगा, अभी मुझे खुश रहने का राइट नहीं है। अभी मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा मैं तभी खुश रहूंगा, उससे पहले अभी मैं खुश नहीं हो सकता। फिर लाइफ पार्टनर मिल जाएगा मैं तभी खुश होऊंगा, उससे पहले मैं खुश नहीं हो सकता। एंड द लिस्ट इज एंडलेस। बी प्राउड कि आपने अभी कितना अचीव करा है, कई लोग उतना भी अचीव नहीं कर पाते हैं। सो बी प्राउड ऑफ योर जर्नी, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एज अ पर्सन, enjoy the moment, live in the present. Automatically, you know सारी चीजें आप मैनेज कर लेंगे। Mm. एंड आई सेड मेरा काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क इज वर्शिप, राइट? सो Right, एवरी ma'am. डे आई गो टू द वर्क, कौन सी फीलिंग के साथ कि थैंक यू डिवाइन, यू हैव गिवन मी सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, एंड आई लुक फॉरवर्ड इन मीटिंग न्यू पीपल, इन गोइंग टू सेमिनार्स, स्पीकिंग इन वेबिनार्स। आई लव द वर्क दैट आई डू।
Secondly, I am very important for myself, so I take care. And to all the viewers, to boys and girls, please take care of yourself. At the end, you matter. Only Right. you matter, nothing else matter. So it's very important, take care of yourself. Have a smile on your face. I always tell my students, have a pleasant smile on your face and seriousness in your thoughts. कि Right. आपके क्या गोल्स हैं, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो यहाँ पर होने चाहिए, फेस पे नहीं। तो खुश रहिए, लोगों से ऐसे बात करिए कि वो आपसे बात करके खुश हो जाए। राइट, आपकी एक अलग इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए कि आपके साथ अगर 100 लोग हैं तो आपकी एक पर्सनालिटी का स्पार्क अलग है। राइट, तो खुद से प्यार कीजिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद पे प्राउड फील कीजिए, स्माइल कीजिए। स्माइल से काम बिगड़ता तो कभी नहीं है, बन जाता है फॉर श्योर। राइट, और जैसा आप फील करते हैं वैसे ही आपकी प्रोडक्टिविटी, आपको फील होता है आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम डूइंग वेरी गुड, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखेंगे। Right, आप एक ma'am. लो सेल्फ एस्टीम में काम करेंगे, यार मेरा कुछ नहीं हो पा रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सो प्लीज लाइफ को एंजॉय कीजिए, एक लाइफ मिली है आपको, इसको रोते रोते क्रिप करते करते आपको स्पेंड नहीं करना। सो गेट सम स्पार्क, स्माइल, बी एंथुसियास्टिक। जो भी कोर्स आप परस्यू कर रहे हैं, वो सीए हो सकता है, वो सीएस हो सकता है, वो सीएमए हो सकता है, वो एमबीए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट्स द पार्ट ऑफ योर लाइफ, वो कोर्स आपने खुद डिसाइड करा है अपने लिए। Right. इजंट इट? किसी ने गन पॉइंट पे आपसे नहीं करवाया है, यू हैव डिसाइडेड दिस कोर्स। सो एंथुसियाज्म के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसको परस्यू कीजिए। राइट, और Right, ma'am. खुश रहिए। बस आफ्टर ऑल लाइफ का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिमेन हैप्पी। क्योंकि आप दूसरों को वही दे पाते हैं जो चीज आपके पास होती है। अगर आप अंदर से सेटिस्फाइड है, कंटेंट है, हैप्पी है, तो वही वाइब्रेशन आप सामने वाले को पास दे ऑन पाएंगे। करते हैं। हम्म। यस मैम। मैम, मैं सारे फ्रेंड्स को और जो मेरे दोस्त हैं, जो व्यूअर्स हम लोग को देख रहे हैं, मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। I had the pleasure of being your MCS student. I was in the batch, and I was constantly impressed. The way you carry yourself, your professionalism, the composed manner, and your demeanor. It was truly fascinating for me, and it was so nice of you and really heartwarming for me that you accepted my proposal for this podcast series and said yes to it, because you were the first faculty who agreed to this endeavor and helped me out. So really thanks a lot for this, ma'am. Thank you so much, Vipin, for inviting me to your podcast. Literally, I had a wonderful time talking with you, interacting with you, and through this podcast, अगर हम किसी एक को भी inspire कर सके, positively influence कर सके, then trust me, this podcast is very, very successful. राइट मैम। मैम, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे। आई डोंट नो कि कैसे पूछूं, बट अगर आप मेरी जगह होती और आप सीए प्रीति मेहरोत्रा का इंटरव्यू कर रही होती, तो आप एक कौन सा क्वेश्चन उनसे पूछती जो मैंने अभी तक आपसे नहीं पूछा है? यू आर क्वाइट गुड इन जॉब। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस पूछे हैं जो बहुत ही रेलेवेंट हैं, जो बच्चों को इन्फ्लुएंस करने में काम आएंगे। एंड इफ आई वर टू आस्क अबाउट समथिंग, इट वुड बी दैट मैम, मेनी अ टाइम्स हमारे को सेल्फ डाउट आ जाता है। मेनी अ राइट। टाइम्स एक लोनलीनेस की फीलिंग आ जाती है। हमको लगने लगता है कि हम लाइफ में स्टक हैं, और जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो हमें लगता है हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। हमें लगता है हमारी लाइफ ही स्टक हो गई है, एंड एवरी वन इज प्रोग्रेसिंग, एवरीबडी इज लीडिंग अ लग्जूरियस लाइफ, एवरीबडी इज हैविंग अ गाला टाइम इन देयर लाइफ। सो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, ये क्रॉप हो जाती है। हाउ टू राइट। डील विद दिस? ओके। मेरा ये क्वेश्चन होता आपसे। मैम, एंड द आंसर प्लीज। ओके, नाइस, आई लाइक दैट। ओके, सो द आंसर वुड बी कि आप सोशल मीडिया में जो सारी चीजें देखते हैं वो वैसी ही नहीं होती, तो प्लीज सोशल मीडिया पे आप इतना ट्रस्ट मत कीजिए। राइट। सेकेंड, सुना है ना आपने वो डायलॉग, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। हाँ, माउंटेन भी राइट। पीते जाओ।
Mountain Dew. I'm not taking credit. Credit is Mountain Dew, Right, right? So it's very, very natural. You can have this self doubt, this sense of low security at any stage of life. So it's absolutely okay. The thing is कि आप उस टाइम कैसे खुद की सेल्फ मेंटरिंग करते हैं. आपने सुना है ना एक वर्ड, सेल्फ मोटिवेशन, right. सेल्फ रेगुलेशन, राइट? आपको कोई सामने वाला मोटिवेट करेगा, दैट मोटिवेशन इज गोइंग टू लास्ट ओनली फॉर 1 डे, 2 डे, मैक्स टू मैक्स 3 days. But this inner motivation that yes, my time will also come, I'm giving my 100%. I'm giving my best. Whatever is in my control, I'm doing 100% justification with that. Having patience, having this positive outlook, right? Remaining calm and composed, अपने आप को समझा के, no, my time will come. I'm going to create wonders. अभी मुझे hard work करना है. अभी मेरा patience test किया जा रहा है. I'm not going to give up. राइट, आई एम गोइंग टू स्टिक टू माई एम्बिशन. और ये कुछ साल हैं, जब मैं आगे 5 years डाउन द लाइन इनके बारे में सोचूंगा, दे आर गोइंग टू मेक मी वेरी वेरी प्राउड कि मैंने क्विट नहीं किया, Hmm. आई डिड नॉट गिव अप. राइट, तो जो मैंने अपने लिए लाइफ इमेजिन की है, जो फ्यूचर मैंने अपने लिए देखा है, आई एम नॉट गोइंग टू सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन दैट. तो सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन, it plays a very very important part in your life. So talk with yourself, treat yourself as you are your best friend, and trust me, you will get all the answers that you want. हमेशा आपको एक भाई की जरूरत नहीं होती है शोल्डर रख के रोने के लिए कि क्या करूं कैसे करूं. लर्न टू स्पेंड सम टाइम क्वाइटली विद यू, टेक अ पेन एंड पेपर. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट मेजॉरिटी ऑफ आंसर्स. Yes, ma'am. Yeah. Okay, ma'am. Last but not the least, I would ask you something very personal. As the CA results are already coming, it is on 10th of January. All of the CA students are very anxious, nervous, and some might be very confident, but not me. We are looking for someone to guide us and mentor us. So, what is a piece of advice that you would like to give us as students, CA community especially, that we should follow and go on with our lives? Okay. So the message that I would like to give to the students is कि आपने जो अपने लिए ये dream, देखा है that you want these golden prefix before your name, chartered accountant. Don't settle for anything less than this, right? अभी result जो भी हो, I truly wish कि you get positive result. I pray to God you get the best of what you deserve. But God forbid अगर result negative भी होता है, accept that, acknowledge that, don't waste your time cribbing over the result. अभी जो है हम उसको change नहीं कर सकते. डीप इनसाइड आपका पैशन कितना ज्यादा स्ट्रांग है, आपका डिजायर कितना ज्यादा स्ट्रांग है, मींस कितना ज्यादा आप वो 2 लेटर्स को अपने नाम के आगे चाहते हो, इट सेज एवरीथिंग. Right, राइट, तो अगर आपका पैशन, आपका डिटर्मिनेशन, आपका डेडिकेशन बहुत स्ट्रांग है कि सीए तो मुझे बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मुझे अपने नाम के आगे लगाना है, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्रिबिंग करके या फिर परेशान होके. जस्ट बाउंस बैक, दोबारा से स्ट्रैटेजी बनाइए, अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि कहाँ पे गलती हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, right. राइट? क्योंकि लोग तो पास हो रहे हैं. Uh, Thanks a lot for being with us and sharing so much memorable and insightful thoughts of yours with all the students who are watching this podcast. And honestly, it was a great pleasure to have you here with me. And I hope the next time, whenever we will do this again, you will be happy enough to come again and share your insights with the students. So, thanks a lot, ma'am. Thank you, Vipin. It's my pleasure to be here on your channel, and all the best wishes. Thank you so much.